Hello, friends. I'm Dr. Puja Kapoor, consultant pediatric neurologist, Paras Hospital, Gurgaon, director and co founder, Continua Kids. So, the topic of today's discussion is what is the difference between applied behavioral analysis and sensory integration or occupational therapy? So, a lot of time our parents are confused as to which therapy to take, which is one what is the difference between the different type of therapies. And because there are two most important therapies, conventional, which are scientifically proven, and they are occupational therapy and applied behavioral analysis therapy. So the fundamental difference, there are fundamental differences between the two, and but both of them have been approved and proven as a scientific therapeutic modality of choice for the treatment of autism spectrum disorder. So let us start with a child who has got a lot of sensory concerns. By sensory concerns, I mean visual, auditory, tactile, vestibular. So you would see a lot of children who would walk on toes or would try to smell everything to their nose. They will take everything to their nose and start smelling, and then they will keep it back. They will taste everything, they will put everything in their mouth, anything they will put up in the mouth, any metallic thing, any wooden, any corner, anything which they found, they just want to put it in their mouth and feel the texture, take the texture, and then they will keep it back, or maybe start chewing it also. You could see children who could be just moving all over, all around. There would be children who would be moving up on all the things, which is they would move on the sofa, they'll jump from one sofa to another, from another to another, or they will move up on the cupboard, on the fridge, refrigerators, and would just lie down there. Or anything which is at a height, they will find out ways to go there, reach there, and would lie down just there. So you could also find children who could just lie down on the flooring, and they will just lie down on the flooring and feel the texture. There would be children who would just do not want to have anything stuck on their fingers or something on their mouth, anything on their mouth. So these are all sensory concerns. So these sensory concerns would could also be present in normal children also. So you could see normal children who are talking, who are expressing, who have good eye contact, who have everything like a normal child, but they would walk on toes. But they would have other features which would be normal. There would be children who would, when excited, would do hand
Yeah. Sorry, there was some technical glitch. I lost. So I was on that you could have children who could walk on toes, or when excited, they would do hand flapping like this. But they are neurotypical in the form of they would have all the other features like eye contact, response to name. They would not have any other feature which could be characteristic of autism spectrum disorder. So these are also sensory concerns, but once these sensory concerns become so large that they come into your way of communication, connecting, reciprocating, then that is a problem. And that is why, for all these children who have these concerns, we go for occupational therapy or sensory integration therapy. Now comes the other part of it, that is applied behavioral analysis. So we see a lot of children who have got concerns with their behavior. As we do occupational therapy with the children who have got autism, they become better. They would get connected to the word in a better way. They would understand the thing, and then they will start having tantrums. The tantrums may be so huge that at times they just won't get into the therapy room. Once the mother is trying therapy at home, they will just cry. They will just resist everything which is related to some work or some therapy, or they're doing some activity. And that is the time you have to shift to the behavioral therapy. That is the time you have to go for ABA. A lot of time parents says that we have started with ABA therapy which is for 20 to 30 minutes. So therapy, ABA therapy is never is for 20 to 30 minutes. It is basically a therapy where you want to change the behavior of the child. So if you have to change the behavior of the child, you cannot just change the behavior in next 20 30 minutes. You require a bigger hours to make the child behave in the way you want. So now, after the child becomes a bit better, we see in a lot of children that they are having a huge amount of behavior concerns, and that is the time, that is one indication of shifting the child from this trend to the behavior therapy class. Now, what are the other indications? So as the child becomes better and the sensory concern slows down, the sensory concern starts becoming better, that is the time when you have to again or can go back to the behavior therapy. Either you can go from occupational therapy, add on speech or special education, or what you do is you can go to a ABA therapy. ABA in itself is a complete therapy. It means that um, it has got all the things which a child requires for learning, for speech, for behavior, for understanding, for cognition. So if you are going in for ABA therapy, that means you may not require then speech therapy or special education, because ABA in itself is a comprehensive plan where they cover up all these things. Now, the point is that there could be some things like you may have certain sensory concerns, and also you want to have learn the things or have behavior. In that situation, you have to take both the therapies, a bit of OT and a bit of AB. Now, here the problem comes in, because in a lot of places we have seen that, suppose my child has got a concern and he does not like the noise of that. He just gets attached to, or get very much, he likes or he gets obsessed with the sound of certain object, of a toy. Now, according to the occupational therapist, he would say just avoid that toy because he's getting obsessed with that toy, with that sound, and because of this, he may have auditory sensory concern later on. So, I will avoid that. Whereas the philosophy of ABA therapist would be that okay,
because he likes that thing, I would use it as a reinforcer in my therapy. So, what I will do, okay, you do this work and I will make you play with this toy for 5 minutes. So over here, there's a lot of overlap, or not overlap, basically a fight, that things which would be prohibited in OT therapy, the ABA therapist would say, okay, please, I would use that as a reinforcer. And so there would be a fight that the child is deteriorated because of the ABA therapy, and ABA people will say, I will not stop this because that's a very good reinforcer for me. I would make my child do these things because of that toy only. So no, I'm going to give. So that is why at our place, what we do is like, at Continua, we just sit together, all of the therapists, and find out what is the way how we have to work in. And that is why, for all those parents who are taking therapies outside of Continua or wherever they are, they should understand that these should not be totally against each other, and every therapist has to work in a way which works in sync with the other one. So the correct route would be that you stop that toy or take out some other toy which would be beneficial in the sound voice, which would be helped by the ABA therapist, and also do not hamper the proceedings of my OT therapist too. So just make sure, because this is the point where every most of the parents come into us, that what to do. So you have to sit and find out how to make a in middle way, because sometimes the child may require both of these therapies. Now, what is the basis of ABA therapy? Like, as I told you, that for OT therapy, the sensory integration things is must. What is the basis for ABA therapy? For ABA, they believe that whatever the child does is because of whatever happened antecedent to that. That means the theory of A, B, and C. So whatever your child behavior is today, it is because of whatever happened before that. That means what is antecedent to that, and that behavior will prolong or would stay or would minimize. It all depends on your reaction to that behavior, that is your C. So, if you want that behavior to increase, to promote, then you have whatever behavior he did, you do positive reinforcement for that behavior. So, suppose in applied behavioral analysis, what they do is like, suppose I want to make my child learn the things or pay attention. So, maybe out of three cards, there is a banana, there is an apple, there is a pomegranate. I am making him learn wherever apple is. So what I'll do, if I'll ask him after telling him this is apple, if I'll ask him where is apple, if he points towards that, so that means that is one thing which I like to promote in the child. And so I will give what? I will maybe show him a toy, whatever he likes, or I'll give him the star, I'll give him something to eat, whichever he likes, anything which will help him to, which helps as a reinforcer. Yes, I am right, and I have been awarded for telling this right thing. So, so this is how it works. And suppose I have a behavior which I don't want to promote, and that is whenever he does that kind of behavior, I would have negative reinforcement. That means I would not give him anything. I would, you are not allowed to have any physical punishments or anything negative for in ABA. But yes, definitely I am not going to give you the positive reinforcement which was given to you on giving the right answer. And if you are giving a wrong answer, I'm not going to reinforce that with anything. Okay, so that is the basis for ABA. For anything, they don't believe in that there could be sensory concerns. They believe if the child is stimming or like this, so that means there was some previous thing which happened, and because of that the child is having this type of
stimming or a behavior, and you could stop that by distracting the child or by giving negative reinforcement for that behavior. Or maybe they tell the child, if you are feeling the you want to do that, just put your hands in your pocket, so that if the urge is not shown outside like this, and once your hands are in the pocket, you would be able to control that movement of yours in a better way. So what happens is, the child is very well studied about all his behaviors, what are his likings, what would be the positive reinforcement in that child, and based on that, the ABA therapy takes place. Now this ABA therapy is done by people who are BCBA certified, because we see a lot of people doing ABA therapy or behavioral analysis. It's not an easy one. Nobody who's not qualified would be able to do that. It is it takes years together to understand the child. It takes years together what we would do or what we would avoid in what type of circumstances. And definitely, it is one of the scientifically proven therapies which have been there. And so, for all those people, make sure that you are putting your child for a behavior therapy. Make sure that it is done by a qualified person, so that you get the result out of for your child. Now uh, one important thing is that sometimes a lot of children, while going for ABA therapy, also put the child for speech therapy. Now, the because everybody believes that the only main problem with autism is not verbal speaking, not verbal language, but that is not the case. So we at our center, it is like, we have made a plan for the children, which is unique for continua for every child. It is tailored accordingly to the needs of the child, but then we fix up the solution looking at the child. But all those people who are not outside, they also have to understand that ABA therapy in itself is a complete plan. And all those children who have gone through or have become much better, the understanding has improved after OT therapy. And just only if the speech is required help, if the requirement is for the speech, then only we put the child for the speech therapy. Else, what we do is like, we try to have everything under the ABA therapy only, because that is a complete comprehensive plan. So what happens is that if you put a child who's got ABA therapy also and speech, again the methodology is very much different. A speech therapist may be doing whatever is against which is there for an ABA therapy. So kindly make sure that whatever therapies you do, you make sure that you sit with the therapist of all the modalities. If your child is going to two things, you sit with both the therapist and plan accordingly, so that there are no everything doesn't crosses each other and they are not against each other. Everything should help the child in a better way. So the take home message would be that whatsoever you do, whatever therapies you do for your child, make sure that you sit with the therapist, both of them, if you are taking multiple therapies, so that everybody knows what the other person is doing and everybody is on the same page. And so that helps the child in a better way. So I think that is the major basics for the difference between ABA therapy and occupational therapy, and what has to be given when. I think I've made it clearer. So I'll go now to the comment section, if agar thoda if there are any. Okay. So hi, Vandana. Hi, doctor. Hope you are doing good. My kid, 5-year-old, mild autism, every time wants to eat something, not specific. She doesn't demand for food but explore in kitchen by herself. We do not understand either she is hungry or what. So, sometimes these children have what you call as mouthing.
But if your child is going for mouthing to the kitchen, so she wants to have something, because if the child would want something else to put in the mouth, they are not specifically going to the kitchen only. If the child is going to the kitchen, maybe she wants to have something or the other. So all the children who want to do mouthing would take anything in the mouth, or what we also called as pica eating. Pica is anything non-edible which is not to be eaten, to be taken in the mouth, is called as pica. Sometimes what could be the thing could be you could have worms in the stomach. Maybe her you whatever you are giving, she wants more. Maybe she have worms, so just try giving her some deworming medication. And because she's specifically, you said you are going for the kitchen only, so maybe she is hungry, that is why. Else she would have gone to different other places if the thing would have been mouthing. Okay. So for Siddharth, hi Siddharth. Hi ma'am, my daughter does continuous self talk, meaningless and sound. Is therapeutic music good for her or not? Yes, therapeutic music does very good things for us, because sometimes when the children have meaningless talks and sounds, they want to soothify by their sounds to themselves, so that they do not want to they are not interested in the surrounding sounds. So yes, definitely music help. And I found somewhere in YouTube that their music through headphone is good. By giving that headphone, you are giving that app, you are just giving that sensory diet to the child. Okay, take the music, just get relieved, so that they don't talk meaningless and produce sound. And once they will stop talking, they would try definitely to listen whatever is happening around them. So hi Jayesh. Namaste. My kid is ADHD and he's always takes rappers and plays with them. How to stop him doing, as he gets annoyed when he take him. So again, make sure that there should not be any pathological reasoning. So deworming is one. Make sure that the child is not having iron deficiency or calcium deficiencies. Sometimes whenever the child has got iron deficiency or vitamin or calcium deficiency, also have worms in the stomach, could take in a lot of things, which is called as again pica eating. So make sure that you treat the child for this. And again, if this is not sorted out after giving all these medication, then that means that could be a sensory concerns. But make sure that the child has these three fulfilled before. And neurologist has prescribed on some medication to reduce his hyperactivity. Okay, so definitely. So yes, you should use the medication for hyperactivity if the child is very hyper. Sometimes in a child who's got hyperactivity, if the child hyperactivities get resolved, then also it could get resolved. Just check this out, okay? Okay. So Deepak, नमस्ते मैम। मैंने आपसे 8 महीने पहले बच्चे का परीक्षण कराया था कोरोना के कारण। ओके, सो दीपक पूछ रहे हैं कि जो है अभी आई कांटेक्ट और जो है नाम रिस्पॉन्स पूरा है, लेकिन अभी जो है वो बात नहीं कर रही हैं, और वर्बल स्टिमिंग भी है, और एकेडमिक में तो वो अपनी दुगनी बच्चों से जो है आगे बढ़ गई हैं, जोड़ और घटाना भी आ गया है। देखिए, अभी आपने यहां तक पहुंचा दिया है बच्चे को, तो घबरा क्यों रहे हैं? आपने आधी से ज्यादा जर्नी तो कर ही ली है पूरी। अभी कितनी जर्नी बाकी है? अभी काफी जर्नी आपने निकाल दी है। अगर बच्चे को जो है नजर में नजर डालना आ गया 8 महीने में, देखिए आपने चमत्कार किया है एक तरीके से, क्योंकि जो है
नजर में नजर डालना आ गया है, नेम रिस्पॉन्स आ गया है, नीड बेस्ड लैंग्वेज मांगने लग गई है, पढ़ाई में कहीं पर भी पीछे नहीं है, तो जो है आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी तो जो है आपने आधे से ज्यादा डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया हुआ है, क्योंकि इतना सब कुछ अगर कर लिया है तो जो है, और अभी एज 3.1 ईयर्स की है, तो प्लीज दीपक जी घबराइए नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी आपको मगर मेहनत करनी है। अगर आप ये सोचे मैं बीच में बच्ची को छोड़ दूंगा, तो जो है अभी तो नीड बेस्ड वर्ड्स आए हैं, बट 8 महीने में आपने इतना सब कुछ कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज करते रहिए। ठीक है, मुझे याद है कि आप कब आए थे मेरे पास, मुझे याद आ गया। हम्म। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा कर लिया है 8 महीने में ही, प्लीज हिम्मत नहीं हारिए। So, Pinkyash, my son, ages 7.5, ADHD in medication. Throw the flashcards and pick run on other side of wall. Throw them again. What supposed? देखिए पिंक्याश, मुझे जो है आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं आप। इसको थोड़ा और क्लियर करिए तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। और शेविल, मैम मेरी बेटी को ऑनलाइन एबीए लेते हुए 4 महीने हो गए हैं, ऑफलाइन नहीं। उसकी वोकैबलरी इंक्रीज हुई है, बट स्टिल प्रॉम्प्ट पर ही आंसर देती है, एक वर्ड ओनली, एंड अब वो भी रोज एबीए की एक्टिविटी से बोर हो गई है। तो अब एबीए कब तक कराएं और उसमें क्या फर्दर कवर होना है? देखिए मेरे हिसाब से अब तो सब कुछ जो है, सारा कुछ जो है वो अब ऑफलाइन हो गया है स्टार्ट, बच्चों के स्कूल तक खुल गए हैं। सो प्लीज आप जहां से लेती हैं थेरेपी, उनको बोलिए कि प्लीज जो है मेरा ऑफलाइन स्टार्ट कराइए, क्योंकि देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है। तो कोशिश करिए, उनको बोलिए कि जो है वो ऑफलाइन की तरफ को जाए बजाय ऑनलाइन के। ओके। हाँ मनोज, मैं अभी जितने भी अब आंसर दूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में ही बोलूं, है ना? उत्पल मलिक, 3 ईयर ओल्ड स्पेक्ट्रम में है, ही इज रिसेप्टिव बट ऑलवेज सीज फैन एट ईच सेकेंड, देन आई होल्ड हिज हेड डाउन एंड देन ही क्राइज अ लॉट। सो देखिए, अगर जो है ऐसा नहीं होता है उत्पल की, जो है आप जो है किसी चीज को अगर तोड़ना चाहते हैं तो वो उसको, उसका सर नीचे कर दे, क्योंकि ये तो उसको मजा आ रहा है देखने में। तो आपको तो ये करना है कि जो है वो उसको वहां पर, उसको मजा ना आए वो चीज देखने के लिए। एक सेकेंड। ये चीज देखने के लिए उसको मजा नहीं आए। अब उसको मजा आ रहा है क्योंकि गोल गोल चीजें जो है वो देखते हैं तो उनको मजा आता है, ऐसे ही फैन को जब वो देखते हैं तो उनको मजा आता है। तो जो है ये भी एक तरह की सेंसरी चीज होती है। तो प्लीज जो है आप उसका सर नीचे करने के बजाय, क्योंकि ऐसे अगर अभी पंखा देख रहे हैं उसके बाद कोई और गोल चीजें लग जाएंगे, कोई और गोल चीज देखने लग जाएंगे, तो जो है कितनी चीजें आप हटा सकते हैं, जो हटा सकते हैं वो ठीक है। बट इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए यही है कि आप प्लीज जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ बैठें और उनको बताएं कि देखिए गोल चीज के लिए बंद करने के लिए मुझे एक्सरसाइज बताएं, ताकि जो है वो मेरा बच्चा जो है वो गोल चीज की तरफ जो है वो ना देखे। दूसरा ये है, उसका सिर नीचा करने के बजाय उसको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है आप सिर नीचा करते हैं वो रोता है बच्चा आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ये सोचिए ना, आप कुछ काम कर रहे हैं, मैं आपका सिर नीचा कर दूं, इधर कर दूं। कोशिश करिए डिस्ट्रैक्ट करने की उससे। और प्लीज अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के देखिए, क्योंकि अगर खाली एक चीज को ये देख रहे हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जिसके ऊपर काम करना बाकी होगा अभी। ओके। हाँ। ममूमा खान, मैम एबीए थेरेपी पर डे कितने घंटे की होनी चाहिए? देखिए, पर डे का ये है कि जो है डिपेंड करता है कि कितने बच्चे को जरूरत है। कई बार हम 1 घंटे से स्टार्ट करके 4 घंटे प्रतिदिन तक भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे को कितनी जरूरत है। ठीक है। बट हाँ, 15 मिनट से लेके आधे घंटे की कोई एबीए थेरेपी नहीं होती है। मैम मेरे बेटे का बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है, 5 महीने से थेरेपी पर है, प्लीज डाइट और वॉमिटिंग और प्रोबायोटिक्स का भी कुछ बता दें। ओके।
सो देखिए, बिहेवियर थेरेपी आप ले रहे हैं, हो सकता है कि कम ले रहे हो, क्योंकि जो है अगर जो है आधे घंटे पौन घंटे ऐसा नहीं, थोड़ा कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे के ऊपर होना चाहिए। देखिए बेसिकली, क्योंकि आप किसी बच्चे का बिहेवियर अगर चेंज करना चाहेंगे तो जो है कैसे जो है आप किसी को इतना जल्दी कुछ मिनटों में कर लेंगे। तो इंक्रीज करिए अपने बिहेवियर थेरेपी का टाइम। दूसरा मैम, डाइट और विटामिन और प्रोबायोटिक्स। तो देखिए, डाइट हो गई, विटामिन हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गई, ये सारी चीजें अभी स्टडी में है। अगर हम बच्चे को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपका मन है तो दीजिए, बट ये है कि पूरा पीछे मत लगे रहिए उसके, क्योंकि ये अभी प्रूवन नहीं हुआ है कि कौन सा कितना क्या जो है हेल्प करता है। बट क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ स्टडीज में बोला गया है कि डाइट और विटामिन और प्रोबायोटिक से बच्चे को हेल्प मिलती है, तो दे सकते हैं। खास तौर पे प्रोबायोटिक्स उन बच्चों के लिए जो कि जो है उनको पेट की समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, ब्लोटिंग होता है, पेट फूला फूला रहता है, तो उन बच्चों के लिए डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स हेल्प कर सकता है। ओके। शेवल मैम, मेरी डॉटर स्टार्टिंग में रीइंफोर्समेंट देती थी, तो अब वो बिना उसके भी बताती है, तो क्या मैंडेटरी है रीइंफोर्समेंट? नहीं नहीं, अगर बच्चा जो है रीइंफोर्समेंट के बगैर अब बताने लग गया है तो उसको बोलते हैं फेडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। फेडिंग का मतलब कि अब हटा दीजिए रीइंफोर्समेंट को। अल्टीमेटली हमारा गोल तो ये है कि हमें रीइंफोर्समेंट हटाना है। रीइंफोर्समेंट हमें तब दिया जाता है ताकि एक अच्छी आदत की आदत पड़ जाए। तो जब अब उसकी आदत पड़ गई है कि वो अब बताने लग गई है चीजों को, तो रीइंफोर्समेंट का तो रोल ही नहीं रह गया। तो रीइंफोर्समेंट, जब हमें आदत पड़नी शुरू हो जाती है चीजों की, तो हम बोलते हैं कि अब हमें फेडिंग करनी है रीइंफोर्समेंट की। फेडिंग का मतलब क्या हुआ? उसको धीरे 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 करके हटाना है। तो अब अगर क्योंकि बच्ची की आपकी आदत बन गई है, तो फिर रीइंफोर्समेंट तो हो गया, काम खत्म हमारा। अब कोई नई आदत के लिए जो है उसको यूज करिए। ओके। Okay. So, Lavleet Kohli. Hello, doctor. My 5-year-old boy on the spectrum has a lot of gas problem. He cries and cries until he burps, after which he gets better. So, yes. सो लवलीत, देखिए ऐसे बच्चों के लिए ही कई बार जो है हम जो है वो प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को गैस प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग प्रॉब्लम है। पहली चीज तो आप मेक श्योर करें कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसका खान पान का ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, जैसे मैदा हो गया, आपका जो बहुत ज्यादा दूध हो गया, कई बार बहुत ज्यादा दूध की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीजों से बच्चे को हटाएं। उसका डाइट में जो है पपीता हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड करें ताकि उसका कॉन्स्टिपेशन ना हो। ऐसी चीजें जो बहुत गैस प्रोड्यूस करती हो, जैसे राजमा हो गए, बीन्स हो गए, ये सारी चीजें भी खाने में से हटाएं। और आप प्रोबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है ऐसे यूज करने से कई बार जो है ये समस्या सॉर्ट आउट होती है। Shaista Anjum. Is autism is by birth or can happen at any age? My daughter is diagnosed at the age of 3 years, but according to doctors, it developed during COVID period. So देखिए, सारे बच्चे जिनको जो है जितने भी बच्चे 2 साल 3 साल के हैं, उन सारे बच्चों पर जो है, सारे बच्चों को जो है कोरोना की वजह से घर पे ही रहना पड़ा। वो लोग कहीं नहीं गए, उन्होंने लोग नहीं देखे, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। माता पिता जो है वो सारे के सारे अपने कामों में लग गए, ध्यान नहीं दिया जा सका ऐसे बच्चों पे। बट एक चीज देखिए, कोई सारे के सारे तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, सारे के सारों को तो डायग्नोस नहीं किया गया है ऑटिज्म। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस लाइन तो गड़बड़ था ही हमारे बच्चों का, जिनको अब ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, कि वो उसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो गए हैं। तो प्लीज, अगर जो है कोरोना की वजह से हुआ है या कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, बट अगर डायग्नोस हुआ है, इसका मतलब अगर उसको सिम्टम्स हैं, प्लीज उसको ठीक करने की कोशिश करिए, बनिस्पत की जो है ये कोरोना की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो है एट द एंड ऑफ द डे नहीं मैटर करेगा। मेन चीज मैटर करती है, अगर सिम्टम्स हैं तो प्लीज उनको ट्रीट करिए। ओके। So, did medication work in autism like speech and cognitive? So देखिए, खाली जो है दवाई से जो है कभी भी आज तक कोई भी ऑटिज्म ठीक नहीं हुआ है। प्लीज आपको थेरेपी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है इट्स अ बिहेवियर थिंग। उसका मन हो गया है कि उसको जो करना है वो करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे।
तो वो आप दवाई से कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना? सोनिया भाटी। सो हाय सोनिया। मैम क्या घर पे मैम क्या ये घर पे कर सकते हैं एबीए? बिल्कुल कर सकते हैं एबीए, बट उसके लिए आपको कुछ तो ट्रेनिंग लेनी होगी। बगैर ट्रेनिंग लिए आप कैसे करेंगे, है ना? तो आपको समझ में तो आना होगा कि क्या जो है इसको, किस तरह से मैं इसको ट्रीट करूं। यस, ठीक, बेटर हो सकते हैं ट्रेनिंग लेकर, बट उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Ma'am, my child is Manish. Ma'am, my child is 6 months old and does not make eye contact. She has been diagnosed as cerebral palsy. What do you suggest? So, अगर जो है 6 महीने का बच्चा नजर में नजर नहीं डाल रहा है, तो क्या वो सेरेब्रल पॉलिसी होने के लिए आपको ये बताना है क्या वो गर्द, क्योंकि देखिए, नजर में नजर नहीं डालना ऑटिज्म में भी हो सकता है, सेरेब्रल पॉलिसी में भी हो सकता है। बट सेरेब्रल पॉलिसी में और भी बहुत सारे मोटर प्रॉब्लम होते हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा गर्दन संभालता है, तो क्या वो गर्दन संभाल रहा है? बिकॉज जर्नली जो है जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉलिसी होती है, वो अगर नजर में नजर नहीं डाल रहे, तो कई बार जो है वो गर्दन भी नहीं संभालते हैं। उनको कोई चीज सामने दो तो वो लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो वो देखिए। और व्हाट डू यू सजेस्ट मीन्स, मतलब ये बहुत कम जानकारी दी है, मैं इसके बेसिस पे आपको डायग्नोसिस नहीं बता सकती हूँ। Azia. Hi, ma'am. My 3-year-old cannot understand commands like where is your daddy, and his response is just watching here and there, babbling but singing poems but not understanding command. सो आई थिंक आजिया, मुझे लगता है कि जो है इस बच्चे को थोड़ा सा ग्लोबल डेवलपमेंट डिले हो सकता है, थोड़ा सा बुद्धि का हेरफेर हो सकता है। क्योंकि जो है देखिए, वो पोयम वगैरह बोलता है, बट आप जब उससे पूछते हैं तो वो आपकी तरफ देखता है, मगर अगर देखता है और समझने की कोशिश कर रहा है बट उसको नहीं समझ में आ रही, तो ये बुद्धि का हेरफेर भी हो सकता है। तो प्लीज जो है इसको डॉक्टर के पास दिखाएं, बिकॉज 3 साल के बच्चे को डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, ये कहाँ है। ओके, सो एक आध क्वेश्चन लूंगी और मेरा गला काफी खराब हो रहा है। शिव, my 3.5-year-old kid has good eye contact. He's much social. He does not have repetitive behavior. He has speech, but he cannot put out 3-word sentences. He has gone through few months of therapy. So ठीक है, अगर यहां तक हम पहुंच गए हैं कि जो है हम 3 वर्ड सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ही हेल्प करिए। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी आ गई, सोशल हो गया, रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं है, स्पीच आ गई है, लैंग्वेज नहीं आई है, तो आप उससे बात करिए, उसको स्कूल में डाल दीजिए। क्योंकि देखिए, हम जो है, अगर आई कांटेक्ट अच्छा आ चुका है, सोशल हो चुका है, तो वो जो है, अगर सोशल हो चुका है तो वो बच्चों के बीच में रहकर सीखना शुरू कर देगा। सो प्लीज उसको स्कूल में डालिए। और अगर जो है, क्योंकि 3.5 का हो गया और अगर अभी 3 वर्ड नहीं आए हैं, तो आप स्पीच थेरेपी में डाल दीजिए प्लीज। क्योंकि देखिए, उम्र बढ़ जाएगी एकदम से, तो बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी करनी होगी, तब आप बहुत ज्यादा जो है स्पीच थेरेपी और उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अभी बच्चा छोटा है, कोई पढ़ाई नहीं है, अभी ध्यान, अभी जो है कम चीजों पे हमारा नजर है। तो अभी कोशिश करिए कि जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, उसके लिए स्पीच और स्कूल में डाल दीजिए बच्चे को। आई थिंक मैं और नहीं क्वेश्चन लूंगी। मुझे दिख रहा है बहुत सारे हैं, एक आध आखिरी में ले लेती हूँ। सो ये है SK BC। हाय मैम, आई हैव a 2 year 10 month old. She has some rigid behavior like choosing to walk only on certain direction and screams to change the direction. We are struggling with her streaming. सो खाली रिजिड बिहेवियर है कि और भी कुछ है? नहीं, मुझे पूरा वो चाहिए है कि जो है क्या हुआ है बच्चे को। खाली रिजिड बिहेवियर है तो बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं, बट उसके पीछे कारण क्या है, क्यों वो रिजिड बिहेवियर हुआ, बाकी सारी चीजें ठीक है कि नहीं, समझ बुद्धि ठीक है कि नहीं, मुझे ये पूरी जानकारी होगी, मैं तभी आपकी हेल्प कर पाऊंगी इसमें।
ओके। Hina Ansari. My daughter is 4 years, diagnosed global developmental delay at 9 months. Last 3 years OT and last 1.5 years speech is continuing. ABA started last 4 month, but she does not understand any conversation. सो पहली चीज ये कि जो है आप जानिए कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के आपने कारण ढूंढ लिए हैं कि कई बच्ची को थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है क्या, कोई मेटाबॉलिक कारण तो नहीं है, वो देख लीजिए। और जो है ये तो हो गया, उस लिए बोल रही हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम थेरेपी करा रहे हैं और हमने इन्वेस्टिगेट ही नहीं कराया कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो थायराइड इज वन ऑफ द मेजर कारण फॉर जीडीडी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, तो वो चेक करा लीजिए बिकॉज वो ट्रीटेबल कारण भी है। प्लस जो है अब अगर जो है हमारा 4 साल के होने के बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है तो मुझे बताना होगा आपको कि एबीए वाले जो है कैसे कर रहे हैं, बिकॉज एबीए स्पेसिफिकली इन बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है, जीडी वाले बच्चों के लिए जो कि जो है पीछे हूं और समझ ना रहे हो। आई थिंक यू नीड टू मॉडिफाई द प्लान। आपने 4 महीने से एबीए स्टार्ट किया, ये अच्छी बात करी है। आई थिंक अभी स्टक रही है उसके ऊपर, कारण जानिए और एबीए वालों से पूछिए कि कहाँ पे फंस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद फंस रहे हैं। हम्म। ओके, ये क्वेश्चन में जवाब देती हूँ। कल्पना खरे। हेलो मैम, माय सन इज 2.5 years old and taking lots of genital pressure and I am not getting suitable answer। देखिए, जो बच्चे 2.5 साल पे जेनाइटल प्रेशर लेते हैं उसको जो है हम लोग एक फिनोमिना होता है, वो अपने आप को सेल्फ खुश रखना चाहते हैं, अपने आप को जो है बहुत अच्छे से अपने आप को अपने से ही खुश रखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उल्टे हो जाते हैं, बेड पे लेटते हैं और अपना जो है वो जेनाइटल प्रेशर लेते हैं। कई बार जो है बच्चे टांग के ऊपर टांग करके और जो है अपने आप को ऐसा ऐसा करके हिलाते हैं, तो दैट इज बिकॉज वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। अगर आप इस बात पे ध्यान दें, ज्यादातर बच्चे ये तब करते हैं जब उनको अकेला छोड़ दिया जाए या उनसे कोई बात नहीं कर रहा हो, और इस फिनोमिना को हम अपनी लैंग्वेज में ग्रेटिफिकेशन फिनोमिना बोलते हैं। ये जो आप मुझे बता रहे हैं जेनाइटल प्रेशर, हमारी लैंग्वेज में हम इसको ग्रेटिफिकेशन फिनोमिना बोलते हैं। और इसका एक ही रूल है कि जब भी ये बच्चा कुछ कर रहा हो तो प्लीज 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 उसको जो है डिस्ट्रैक्ट करिए, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए ताकि जो है वो ये बंद कर दे। अगर ज्यादा वो ये करते जाएंगे तो वो एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे और उनको ये करने में इतना मजा आ जाएगा कि आप डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो जब भी ये बच्चा ऐसा कर रहा हो तो जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करिए, उसको कोई ऐसी चीज दिखाइए, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया, चॉकलेट चॉकलेट, या जो भी उसको पसंद हो, कोई खिलौना, कोई टॉय, या उसका नाम बुलाना, या फिर जो है उसको पकड़ के सीधा कर देना, या फिर जो है उसके साथ में जो है कुछ ऐसा खेलना शुरू कर देना जो वो पसंद करता हो, जैसे पीका बू या कुछ भी, मुझे नहीं पता उसको क्या पसंद है, बट ऐसी चीज जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे और उसको जो है वहां से ले आए, वो जरूरी करना है। और इस फिनोमिना को आप ग्रेटिफिकेशन फिनोमिना कहते हैं। आप अगर गूगल में जाएंगे, वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे ग्रेटिफिकेशन फिनोमिना के बच्चे वही कर रहे हैं जो आपने मुझे यहाँ बताया है। ओके, आई थिंक मैं और क्वेश्चंस नहीं लूंगी आज, और जो है हम मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे दोबारा और जो है और जानकारी के साथ। प्लीज आप तब तक आप प्लीज अपने बच्चों की हेल्प करिए, कोशिश करिए कि जो है वो क्या कारण है उनका, कैसे हम उसको डील कर सकते हैं, और हमारी तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।